concept of natural selection. Concept of natural selection. देखिए, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन बाय नेचर. यहां से बस 2 या 3 क्वेश्चंस आता है. And that question is what? The few characters are there which makes the organism more fit with the nature. And these characters are called as fit character. So fit character क्या है? Character मतलब एक टाइप का characteristic. And that characteristics make that organism to more fit with the surrounding environment. And जो more fit है, उसको तो nature select करेगा ना. तो natural selection is directly related to what? ना fitness of the organism. And ये fitness किसके respect में है? ना fit character. So write the sentence. The characteristic that enable the organism more fit. The organism more fit and survive better. The organism more fit and survive better in the environment is called fitness. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेटर वे में क्या बोलेंगे ना? रिप्रोडक्टिव फिटनेस. A very important sentence. Reproductive fitness. So the characteristic that enable the organism fit and to survive better in the environment. जो survive करेगा वो reproduce करेगा. So reproduction is related with what? Reproductive fitness. Related with reproductive fitness. और यहां से क्वेश्चंस आपको उठाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटनेस. जो फिटनेस है ये इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है ना? रिप्रोडक्टिवली फिट. The organism which have the fit character to survive in the nature. And जो nature में survive करेगा, जो fit होगा, वही तो reproduce करेगा. So ultimately, what is the meaning of survival? What is the meaning of survival? Not to reproduce the next generation to come. And that is why fitness directly indicate करता है आपको reproductive fitness. And ये बहुत ही important word है जो आपको questions आएगा. So Darwin refers to what? ना reproductive fitness. आपको ये questions पूछेगा. Who proposed the word Darwin, reproductive fitness, and that is Darwin. तो इसके हिसाब से जो questions आपको conceptual question पूछता है, वो question हम आपको बता देता है. More the fit, more chance of survival. Leads to more number of offspring produced.
अभी हम बात कर रहे थे ना कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मीनिंग क्या है. दिस इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मोर द फिट, more the chance to survival, and more the number of offspring produced. This is called as reproductive fitness. Question आपको देगा कि supposed to be a person A supposed to be a person A, person B, person C, and person D. Person A, it is normal, मतलब healthy. Person B being infected with AIDS. Person C being infected with cancer. Person D again normal or healthy. अब देखिए नॉर्मल और हेल्दी पर्सन, पर्सन ए का 1 ऑफस्प्रिंग है. एड्स जिसको हुआ है उसका 5 ऑफस्प्रिंग है. कैंसर जिसको हुआ है उसका 4 ऑफस्प्रिंग है. एंड द फोर्थ दैट इज नॉर्मल हेल्दी जिसका 3 ऑफस्प्रिंग है. With respect to the reproductive health, that is reproductive fitness, नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, मतलब नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन व्हाट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पे किसके ऊपर इफेक्ट होता है, मतलब which person is more reproductively fit. क्या होगा आंसर? A, B, C, D. क्या होगा? देखिए आप लोग ना सुनते तो है लेकिन दिमाग तक आपका कोई भी चीज पहुंचता नहीं, एंड इसीलिए आप लोग क्या करते हैं ना, गलत पे गलत कर जाते हैं और उसको रेक्टिफाई भी नहीं करते. मैंने 2 मिनट भी नहीं हुआ है अभी मैंने डेफिनेशन पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. क्या लिखा है? आप लोग देखते तो है समझते नहीं है, लेकिन आपका दिमाग कहीं दूसरे जगह पे घूम रहा है. ऐसा तो मेडिकल नहीं मिलेगा, लिख के रखो. क्या मैंने लिखा कुछ देर पहले, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ है, उसी का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. कहीं पे मैंने हेल्दी ये चीज लिखा है कहीं? सो नेचुरल सिलेक्शन मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो फिटनेस इंडिकेट क्या करता है, ये जो फिटनेस वर्ड है ये फिटनेस इंप्लाई किसको करता है, रिप्रोडक्टिवली फिटनेस कि मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली फिटनेस. क्या मैंने लिखा है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग किसका है, तो हु इज सिलेक्टेड, रिप्रोडक्टिवली फिट कौन है, बी वाला पर्सन. मैंने जानबूझ के एड्स दिया है ताकि आपको नजर एड्स में जाए ना कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में जाए. फंस रहे हैं आप लोग. मैं टीचर हूं, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना. मैं स्टार्टिंग से दिखाते आ रहा हूं, लेकिन आप लोग गधे हैं, रास्ते तो देखेंगे नहीं. आपको जो मर्जी है वही करेंगे, करिए. Another scientist जिनका नाम है Alfred Russel Wallace. I've told you in the previous class that
Charles Robert Darwin and Alfred Russel Wallace. These are the two independent scientists worked on the natural selection. And that is the reason why the Darwinism theory is also called as Darwin-Wallace theory. Because the contribution by the Darwin is almost similar to the contribution to be given by the Wallace. Independently they worked. डार्विन का रिसर्च एरिया क्या था? ना गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका, एंड अल्फ्रेड रसेल एंड वालेस का जो वर्किंग साइट क्या है? ये एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है. आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं. एनसीईआरटी पढ़िए जाके. पहला है आर्किपेलागो को. Today it is called as Indonesia. Working site of Darwin is something different and Wallace is something different. Now we are coming to the next topic, evidences of evolution. ये questions में आता है, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है. So coming to the next topic, evidences of evolution. There are different type of evidences. Sir. Evidence means proof. We have different type of proof that evolution has occurred. Evolution किसी को दिखता नहीं है. Evolution कोई फील नहीं कर सकता. Evolution कोई देख नहीं सकता है. तो फिर कैसे हम लोग मान लेंगे? How that evolution has occurred, and with the human being, the most complex animal in the world, how we can? Now, because of some kind of proofs are there. So what are the proofs? That is called as evidence. So there are so many different type of evidences are there. Number one, we will discuss. First, make a list. Morphological and anatomical evidences. Number B, embryological evidences. Number C, paleontological evidences. Number D, biogeographical evidences. These are the four different type of evidences we will discuss under this topic. First आते हैं morphological and anatomical evidences. The evidences which we are getting from the study of morphology and study of anatomy. मतलब external structure and internal structure. So by means of the study of the external structure and internal structure, the evidence we are getting is comes under the morphological and anatomical evidences. मैं एकदम to the point बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. फर्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1. And that is what? नहीं, एग्जाम्पल मत करिए. फर्स्ट आते हैं, हेडिंग करिए होमोलोगस ऑर्डर. पहले आते हैं होमोलोगस ऑर्डर. What is the
डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ आप लोग को कहां पे कैसे इस चीज को समझना है. दोज ऑर्गन which are similar in their anatomy, the organs which are similar in anatomy but may be or may not be, the function is different and the appearance will be different, is called as what? The homologous. और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, the organs which are different in appearance, organs which are different in appearance but the anatomy or the internal structure is similar. इंटरनल स्ट्रक्चर अगर किसी का सिमिलर है तो ये जस्टिफाई करता है कि उनका ऑरिजिन सेम है, मींस कॉमन ऑरिजिन. सो व्हाट इज द होमोलोगस ऑर्गन? द ऑर्गन्स व्हिच आर डिफरेंट इन अपीयरेंस बट एनाटॉमी इज सिमिलर. व्हाई इट इज अपीयर्ड ऑलमोस्ट डिफरेंट? ना बिकॉज द एडाप्टेशन इज डिफरेंट. Some is adapted for the aquatic habitat, some of the adapted for the aerial habitat, some adapted for the running habitat, some adapted for the what now that is climbing habitat. So habitat अलग अलग होगा तो function भी तो different होगा कि नहीं? Swimming habitat, flying habitat, etc etc. तो function different हुआ कि similar हुआ? Different. लेकिन क्योंकि anatomy similar है तो ये justify करता है कि origin same है. तो जब भी आपको ये होमोलोगस एनालोगस का लिस्ट पूछे तो बस एक ही चीज पे फोकस करिए एंड दैट इज एनाटॉमी. अगर एनाटॉमी सिमिलर है, ओरिजिन सिमिलर है, देन होमोलोगस. अगर ओरिजिन डिफरेंट है तो एनालोगस. फंक्शन सेकेंडरी, क्योंकि ऐसे बहुत होता है जहां पे फंक्शन भी सिमिलर हो गया लेकिन वो होमोलोगस नहीं है. सर होमोलोगस है, ऐसा भी हो सकता है. तो मैंने इसलिए बोला कि फंक्शन मे बी और मे नॉट बी डिफरेंट. जरूरी नहीं है, वो मैक्सिमम केसेस में होमोलोगस ऑर्गन में फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन भी ऐसे भी हो सकता है जैसे कि बैट के केस में एंड बर्ड्स के केस में. बैट एंड बर्ड्स का आप ले लीजिए, दोनों का विंग्स फंक्शन तो सिमिलर है लेकिन दोनों होमोलोगस है कि नहीं. इसीलिए मेन पॉइंट क्या है ना, एनाटॉमी. सो होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन, द ऑर्गन्स which are different in appearance डिफरेंट एंड अपीयरेंस मतलब क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी कॉमन है कि डिफरेंट है? तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हो गया डिफरेंट बट एनाटॉमी और ऑरिजिन इज सिमिलर. एंड परफॉर्म different function. Why it is performing the different function? Now because of what? Now different habitat. Habitat अगर अलग अलग होगा, रहने का जगह अलग अलग होगा तो फंक्शन भी तो डिफरेंट होगा. Then it is called as homologous organ. एग्जाम्पल देते हैं. Example number 1. Forelimbs in vertebrates. Forelimbs of vertebrates. मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं. We are taking the vertebrate, for example, we are taking supposed to be
Here that is हम birds लेते हैं, bat लेते हैं, चीता लेते हैं, birds, bat, cheetah, whale and man भी लेते हैं। अब यहाँ पे बर्ड्स को भी आप काट सकते हैं, बर्ड्स को सेपरेट करके यहाँ पे वर्टिब्रेट को आप चेंज करके मैमल्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बर्ड्स ऐड किया है इसलिए मैंने वर्टिब्रेट लिखा है। आप बर्ड्स को हटा के यहाँ पे मैमल्स लिख सकते हैं, बिकॉज बैट, चीता, व्हेल, मैन ऑल आर मैमल्स। आपके एनसीईआरटी में यही दिया है। अभी देखिए फोर लिम्स की बात करें। In case of birds, it is called as wings. In case of bat, it is called as patagium. Patagium आप लोग देखेंगे उसका जो विंग्स है, ऐसा होता है ना, डिवाइड कर देता है ऐसे, तो ऐसे होता है कि नहीं उसका, यही है patagium। बहुत ही सॉफ्ट स्किन होता है, दैट इज patagium। And in case of bat, it is चीता के केस में supposed to be leg हो गया। Whale के केस में this is called as what? The flipper। And in case of man, it is hand। अब फंक्शन की बारी। फंक्शन देखिए, in case of birds and bat, both having flying। In case of cheetah, it is running। In case of whale, it is swimming। And in case of man or human, this is grasping। ग्रेस्पिंग मतलब आप देखिए आपका जो ये जो थंब है, ये क्या है ना, रेस्ट फिंगर्स के अपोजिट में है कि नहीं, एंड दैट इज व्हाई वी कैन होल्ड समथिंग। ये जो हम अगर ये थंब अगर सोचते हैं, अगर थंब अपोजिट टू फिंगर नहीं होता तो क्या किसी चीज को हम लॉक कर पाते? ये जो लॉकिंग है दैट इज ग्रेस्पिंग। ये ग्रेस्पिंग इट इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हाट, नहीं ह्यूमन बीइंग। That is the thumb opposite to finger। That is why it is called as grasping। अब हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का एनाटॉमी को जस्टिफाई करते हैं। अगर एनाटॉमी देखा जाए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का, with humerus, yes or no? Yes। With radius ulna, with pentadactyl origin, pentadactyl मतलब 5 digit। In everything or every organism there are 5 digit, and this 5 digit is called as pentadactyl। Clear है? Every organism comes under this examples having the same pattern of origin। तो आप बोलिए ये एनाटॉमी सिमिलर हुआ कि नहीं? तो ये जस्टिफाई करता है कॉमन एनाटॉमी है, मतलब कॉमन ऑरिजिन है कि नहीं? तो ऑरिजिन इज कॉमन। अब देखिए ऑरिजिन यहां पे हो गया कॉमन, but these organisms have been migrated to different area। मीन्स डिफरेंट हैबिटेट की कॉमन हैबिटेट? हैबिटेट हो गया डिफरेंट। तो डिफरेंट हैबिटेट हो गया तो फंक्शन भी तो डिफरेंट हो गया।
so different function. So different habitat, so different function. And this is called divergent. ये converged हुआ कि diverged हुआ? Diverged हुआ. And this type of evolution is called as divergent evolution. So who justify divergent evolution? Homologous organ ki analogous organ? So homology. तो homologous organ justify करता है कि origin तो common था, लेकिन क्योंकि different habitat हो गया, तो different area हो गया, तो adaptation भी different होगा. So different habitat means different what? ना adaptation. And different adaptation होगा तो function क्या होगा? Different होगा. अगर function different हुआ तो appearance different होगा कि नहीं? That is by different appearance. आप लोग को समझ में आया? कंसेप्ट को समझिए. लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है. कंसेप्ट को समझिए. As the different habitat, different adaptation, so different function and different appearance. लेकिन adaptation क्योंकि common origin है, तो anatomy common होगा कि नहीं? And this is called as divergent evolution. So divergent evolution justify करता है कि origin same है. Origin same है, तो ये evolution हुआ कि नहीं? तो अगर आपको पूछेगा कि divergent evolution and convergent evolution means homologous organ and analogous organ, who proves or who provide the evidence against or in favor of evolution? The homologous. Analogous organ evidence के support में कोई भी evidence नहीं देता है. अगर आपको क्वेश्चंस दिया है ऑप्शन में homologous organ, analogous organ, vestigial organ, connecting links, which do not support the evolution, कौन सा होगा आंसर? एनालोगस. एनालोगस देखो सपोर्ट वही करेगा जिसका ओरिजिन सेम होगा. तभी तो हमको समझ में आएगा कि ये कॉमन ओरिजिन था, अभी अलग अलग हो गया है, मतलब ये इवोल्यूशन हुआ है. लेकिन एनालोगस में क्या है? अपोजिट. डिफरेंट ओरिजिन बट एक जगह पे एक साथ एक टाइम में रह रहे हैं. दे कम टू द सेम प्लेस. तो हैबिटेट सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ? तो अपीयरेंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा? लेकिन एनाटॉमी डिफरेंट होगा बिकॉज द ओरिजिन इज डिफरेंट. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फंक्शन भी कॉमन होगा कि नहीं? एनालोगस, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन. मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में. ये क्लियर है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. So this is the example number 1, full limbs of vertebrate, right? अभी 2-3 एग्जाम्पल और दे देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, vertebrate heart and brain. vertebrate heart and brain आप देखे हैं कि हम लोग पढ़े हैं, कंफर्म्ड है कि फिश से बना है एम्फीबिया, एम्फीबियन से बना है रेप्टाइल, रेप्टाइल से बना है बर्ड्स, एंड रेप्टाइल से बना है मैमल्स. ये हम लोग जानते हैं ना. अब देखिए ब्रेन और हार्ट को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम फिश टू मैमल्स, हार्ट की बात करते हैं. यहाँ पे 2 चैम्बर, यहाँ पे 3 चैम्बर, 3.5 चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर. यस सर नो? कॉम्प्लेक्स हुआ. ब्रेन की बात करें तो ब्रेन भी धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ है कि नहीं? सेरिबेलम का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? सेरेब्रम का धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हुआ है कि नहीं? सो द वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन also justify that simple to gradually complex, and both having the structure brain and heart, it is origin common.
And the last example number 3, that is fawn of bougainvillea and tendril of cucurbita. देखिए थ्रॉन जो है इसका फंक्शन क्या है? थ्रॉन का फंक्शन क्या है? कांटा होता है ना ये, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन ना। टेंड्रिल क्या है? सपोर्ट। फंक्शन सिमिलर की डिफरेंट? फंक्शन सिमिलर हो गया कि डिफरेंट हो गया? डिफरेंट हो गया। लेकिन ऑरिजिन देखेंगे तो बोथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड एक्सिलरी वर्ड. So both are modified auxiliary word. That is why the common origin but function is different. Appearance भी different है. एक है थ्रॉन जो है वो पॉइंटेड होता है कि नहीं, लेकिन टेंड्रिल ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड होगा सपोर्ट देने के लिए. समझे? So that is why different appearance, origin similar, function different, homologous. So we are coming to the next. मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स और नहीं जा रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको और ज्यादा नहीं दे रहा हूँ. आप एग्जाम्पल अपना चूज कर लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से कि कॉमन ऑरिजिन है कि डिफरेंट ऑरिजिन. अगर ऑरिजिन कॉमन हो गया देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? होमोलोगस. एंड ऑरिजिन कॉमन कब होगा? जब एनाटॉमी सिमिलर होगा. सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट. ये था नंबर 1, मतलब होमोलोगस ऑर्गन. वी आर कमिंग टू नंबर नेक्स्ट, एनालोगस ऑर्गन. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, do not provide evidence in favor of evolution. So do not provide the evidence in favor of evolution. ये है एनालॉगस ऑर्गन. डेफिनेशन क्या है? ना the organs having different anatomy. Organs having different anatomy means different origin. But common appearance and similar of function is called as analogous organ. अब एग्जाम्पल देखते हैं. Wings of birds and wings of insects. Insect का wings and birds का wings anatomy completely different है. Birds हो गया vertebrate, tetrapoda, याद है ना? लेकिन insect क्या है? arthropoda.
एक है कॉर्डेटा, दूसरा है नॉन कॉर्डेटा। एक में बोन, मसल्स, ब्लड वेसल सब कुछ है। इंसेक्ट में क्या है ना, दैट इज काइटिनस। ओरिजिन डिफरेंट है कि सिमिलर है? डिफरेंट है। फंक्शन देखिए सेम है, दैट इज फ्लाइंग। समझ में आया कि नहीं? बस खाली लिख रहे हैं, खाली उसका डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई ऑफ ऑक्टोपस मतलब आप सेपिया भी दे सकते हैं, एंड ह्यूमन। तो ह्यूमन का आई एंड सेपिया और ऑक्टोपस ये किस में आते हैं? सेफालोपोड मोलस्क, याद है ना? इन दोनों का आई अगर देखें तो सिमिलर इन अपीयरेंस, सिमिलर इन फंक्शन, लेकिन वन इज कॉर्डेड, अनदर इज नॉन कॉर्डेड। अब बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, कैसे ओरिजिन सेम हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन एक बर्ड है, डॉल्फिन एक मैमल है। दिख रहा है आपको? तो डिफरेंट ओरिजिन हुआ कि कॉमन ओरिजिन हुआ? डिफरेंट, बट फंक्शन तो कॉमन है। फ्लिपर, स्विमिंग। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है ना, मॉडिफाइड रूट है। पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट फंक्शन दोनों का कॉमन है, स्टोरेज। समझ में आया कि नहीं? मैं डिटेल्स जो बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि व्हाई इट इज एनालोगस, राइट? तो एनालोगस, as already told, the origin here it is different origin. डिफरेंट origin हुआ। लेकिन एक जगह पे एक साथ रहेंगे वो। समझ में आया कि नहीं? तो ये डाइवर्स्ड हुआ कि कन्वर्ज्ड हुआ? कन्वर्ज्ड हुआ। सो डिफरेंट origin। डिफरेंट origin means different anatomy, but they have what? The same habitat. अगर सेम हैबिटेट हुआ तो सेम अपीयरेंस भी तो होगा। अगर अपीयरेंस सेम हुआ तो फंक्शन भी तो सेम होगा। तो क्या जस्टिफाई करता है, डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट? क्लियर है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सपोर्ट एनालोगस और होमोलोगस? दैट्स इट। इसीलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, और डाइवर्जेंट प्रोवाइड करेगा डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है?
Complete. Now one word we need to discuss and that is parallel evolution. एनसीईआरटी के जो आपको समरी देता है ना वहां पे भी कुछ लिख देता है ये पैरेलल वर्ड वहां पे लिखा है common adaptation between the members of common adaptation between the members of closely related groups. Common adaptation between the members of closely related groups is called as parallel evolution. Supposed to be हम बात कर सकते हैं this is supposed to be marsupial and this is supposed to be eutherian. Eutherian means placentalia. Marsupial means pouched mammals. मतलब दोनों ही mammals है कि नहीं? Both are mammals. Close related हुआ कि distantly related हुआ? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है closely related groups. तो अगर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स का एक साथ कॉमन एडेप्टेशन हुआ तो अपीयरेंस कॉमन होगा कि नहीं? जैसे कि मार्सुपियल रैट एंड प्लेसेंटेलियल रैट दोनों ही रैट है समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों ही रैट है लेकिन वन इज मार्सुपियल अनदर इज यूथेरियन. तो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स लेकिन एडेप्टेशन कॉमन हुआ कि नहीं? तो फिर ये देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होगा कि नहीं? कॉमन अपीयरेंस कन्वर्जेंट में भी आता है राइट? कन्वर्जेंट में भी तो कॉमन अपीयरेंस है. पैरेलल इवोल्यूशन में भी कॉमन अपीयरेंस हो गया लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? कॉमन अपीयरेंस इन द डिस्टेंट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट. Common appearance in the close related groups is called as parallel. ये है simple. I think आपको समझ में आ गया होगा. तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया खाली मार्सुपियल एंड यूथेरियन. छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने कि रैट हो सकता है. आपको धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ना है. एनसीईआरटी में देखिएगा पूरा लिस्ट दिया है टेबल में. A list of marsupial, a list of placentalian दिया है पूरा. बस वो सारे के सारे एग्जांपल किस में आ जाएगा? Parallel. So we are coming to the vestigial organs. So this is all about the homologous organ, analogous organ. Now we are coming to vestigial organ. तो ऑर्गन्स देखो वेस्टिजल मतलब फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है? नॉन फंक्शनल. तो ऑर्गन्स which are non-functional in the possessor but the same organ is functional in the ancestors and related animals. लाइन को समझे? पोजेसिव मतलब supposed to be I have an organ and that organ
being possessed by me and that organ is non-functional, then that organ is vestigial for me. But that's the same organ is being functional in the ancestral organisms and related animals. Then that organ is called as what? Vestigial. एग्जाम्पल देते हैं. ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग. एग्जाम्पल विल बी डिस्कस विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग. खाली लिस्ट याद रखना है, डिटेल्स हम खाली बोल रहे हैं बट लेकिन लिखना नहीं है. जैसे कि नंबर 1 हो गया, मैंने बात किया था ऑरिकुलरिस मसल्स ऑफ ईयर पिना, याद है? तो ईयर पिना इज अ वेस्टिजियल और फंक्शनल? फंक्शनल. आप ना मेरे बात को समझते नहीं है, वर्ड को कैच नहीं कर रहे. मैंने पूछा ईयर पिना इज ए फंक्शनल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ईयर पिना मसल इज ए वेस्टिजियल. So auricularis muscles of ear pinna. Number 2. ह्यूमन बीइंग में और क्या क्या है बताइए? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, थर्ड आईलिड और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. और क्या है? अपेंडिक्स. विजडम टीथ भी होगा. विजडम टीथ दैट इज थर्ड मोलर टीथ, पढ़े हो? nipple in male, body hair. बॉडी हेयर का कोई रोल है हमारे बॉडी में? वेस्टिजियल. सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन. पार्स इंटरमीडिया, याद करिए, पिट्यूटरी. कॉक्सिक बोन और कोकिजियल बोन, याद है? Because we have no tail, that is why the coccyx bone or the coccygeal bone is vestigial in case of human being. तो ये ह्यूमन के रेस्पेक्ट में वेस्टिजियल का लिस्ट है. तो how this vestigial organ is providing the evidence in favor of evolution? How? Now the same organ is functional in our ancestors, but during the course of evolution, during the path of evolution, the same organ function becomes reduced. Why? छोटा सा एग्जाम्पल. ये जो विजडम और थर्ड मोलर टीथ, ये पहले फंक्शनल था. धीरे धीरे क्या हुआ ना, ह्यूमन बीइंग एक्वेंटेड विद द सॉफ्ट फूड, तो धीरे धीरे हम लोग सॉफ्ट फूड खाना स्टार्ट किए, तो ये जो थर्ड मोलर टीथ का फंक्शन है धीरे धीरे रिड्यूस किया एंड बिकम वेस्टिजियल. हम लोग का जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हम लोग पढ़े मिड ब्रेन में, सुपीरियर कॉलिकुली, इंफीरियर कॉलिकुली पढ़े है ना. तो धीरे धीरे वो डेवलप होने की वजह से ये जो ईयर पिना है उसका मूवेबिलिटी कम होने लगा, क्योंकि ईयर का जो फंक्शन है, सॉरी ईयर पिना का जो फंक्शन है, मसल्स का जो मूवमेंट है, मूवेबल ऑफ द ईयर पिना, उसका फंक्शन कौन ले लिया? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. वी हैव टीयर ग्लैंड, that is why nictitating membrane is non-functional, because the function of nictitating membrane is to clean the cornea. धीरे धीरे फंक्शन चेंज हुआ है, इसीलिए ये ऑर्गन का फंक्शन लॉस हो गया है. समझ में आया? सो ये प्रूव करता है कि नहीं कि एविडेंस है इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन. वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट.
connecting links. The organism or the animal possess the character of two different groups. So when an organism or the animal is possessing the character of two different groups, then we can say it is a link between these two groups. तो लिंक है मतलब ये क्या एविडेंस आपको प्रोवाइड करता है कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. ये अभी मैंने आपके सामने जो लिखा था कि फिशेस से एम्फीबिया, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल्स गिव्स राइज टू बर्ड्स एंड रेप्टाइल गिव्स राइज टू मैमल्स. मैंने ऐसे मर्जी से नहीं लिखा है, अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखा मैंने. हमारे पास प्रूफ है कि फिश चेंज होकर एम्फीबियंस बना है because we have a connecting link between the fish and amphibians. We have a connecting link between the amphibians and reptiles. We have connecting link between the reptiles and birds. We have connecting link between the reptiles and mammals. But there is no connecting link between the birds and mammals. समझे? इसीलिए मैंने रेप्टाइल को यहाँ पे डाइवर्स कर दिया इनटू बर्ड इनटू. मैं चाहता तो रेप्टाइल से बर्ड दिखा सकता था, बर्ड से मैमल्स दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है. बट वी हैव प्रूफ फॉर दिस पर्टिकुलर पाथ. सो लेट्स स्टार्ट. कि क्या हमारे पास एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर 1. मैं डिटेल्स में सीरियली जाऊंगा. यूग्लिना. Euglena is a connecting link between the plant and animal. Because इसके पास क्लोरोफिल है, इसके पास फ्लैजेला भी है. ठीक है. नंबर 2. Proterospongia. It is a link between protozoa and that is metazoa. Sorry, eumetazoa. मेटाजोआ लिख देते हैं. एंड ये कौन सा ना पोरी. प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर. पोरीफेरा जो कि फर्स्ट मेटाजोआ है वो क्या है, मल्टीसेलुलर. तो ये इंडिकेट करता है प्रोटेरोस्पॉन्जिया, प्रोटोजोआ प्लस स्पॉन्ज. प्रोटेरोस्पॉन्जिया पोरीफेरा स्पॉन्ज है. सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा और स्पॉन्ज. नंबर 3. नियोपिलिना. मैंने आपको बताया था नियोपिलिना के बारे में. इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड mollusca. Number 4. Peripatus. Here it is a connecting link between Annelida and Arthropoda. देखो हमारे मलस्क और आर्थ्रोपोडा के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है. मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि एनालिड चेंज इनटू मलस्क एंड एनालिड चेंज इनटू, ये भी डाइवर्स्ड हुआ है. नो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मलस्क एंड आर्थ्रोपोड. नंबर 5. पैरेनोक्लोसस. नाम सुने हो? कनेक्टिंग इन बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट.
is a connecting link between the non-chordata and chordata. Number 6, lungfish. इसको हम लोग बोलते हैं डिप्नोई. Lungfishes is a connecting link between the lungfishes हम पढ़े थे in the chordate chapter with 3-chambered heart and also with lungs. Gills भी है, lungs भी है, fish like body है. So it is a connecting link between what? Now fishes and amphibians. Bony fish. And lung pieces में कभी कभी questions आ जाता है तो मैं लिख देता हूँ 3 different type of lung pieces are there. Protipterus, Lepidosiren, Neoceratodus. Protipterus is actually the African lungfish. Lepidosiren belongs to South America. And Neoceratodus belongs to Australia. लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ ये लॉन्ग फिशेस मिलता है. अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. बाद में हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. नंबर 7, लैटिमेरिया और सिलाकन. याद आया? लैटिमेरिया, सिलाकन. It is a connecting link between same the fish and a bony fish. Same bony fish and amphibian. Number 8, chimera. Chimera is a connecting link between the cartilaginous fishes and bony fishes. Because this particular chimera that possesses the cartilaginous as a endoskeleton. तो cartilaginous हुआ कि नहीं? लेकिन इसमें operculum होता है. So operculum is the character of what? The bony. That is why it is a link. Number 9, reptile, amphibians and reptile के बीच में connecting link है जिसका नाम है that is amphibians and reptile के बीच में connecting link है that is स्पेनोडॉन. उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, बेटर टू स्किप इट. है बहुत सारा कनेक्टिंग लिंक लेकिन एज पर एनसीईआरटी हम लोग जा रहे हैं तो लास्ट हम बताते हैं दैट इज इन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स एंड इन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. याद रखिए यहां पे मैं आर्कियोप्टेरिक्स को स्किप कर रहा हूं. Why so? Because Archaeopteryx is not a connecting link. Because connecting link वही होते हैं जो living होते हैं. But Archaeopteryx, although it is a link between the reptiles and birds, but it is already extinct. इसीलिए मैं उसका लिस्ट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ. उसका लिस्ट हम लोग फॉसिल्स में पढ़ेंगे.
मैं लास्ट दे देता हूं, दैट इज ऑर्निथोरिंकस एंड टैकीग्लोसस. Ornithorhynchus and tachyglossus togetherly called as Crototheria. पढ़े हो? Egg-laying mammals, and it is a connecting link between reptile and mammals. So these are the different list of the connecting links. Complete. So this is all about the connecting link. अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं वेस्टिज, दैट इज एटाविज्म. कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी किसी ह्यूमन बीइंग में द पावर टू मूव द ईयर पिना. Lion baby. Lion baby means the baby with a small tail. Some persons are also there in which the hairs are very big, dense and long hair. देखिए हो, ये जो कैरेक्टर है ये हम लोगों का कैरेक्टर है कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है? The movement of the ear pinna, long and dense hair, a presence of tail, these are all ancestral character. The character which is already extinct, or if it is present as a vestigial organ, will suddenly reappear or suddenly refunction. अगर नहीं है तो reappear होगा, अगर है तो function करेगा. Then that is called as what? ना atavism. Atavism का simple मतलब है footprint. Footprint किसका होता है? जाने वाले का या आने वाले का? जाने वाला मतलब एंशिएंट हो गया कि नहीं? तो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टर रीअपियर हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटाविज्म, फुटप्रिंट. सो reappearance of vestigial organ, sorry, reappearance of ancestral organ, or refunctioning of vestigial organ is called as atavism. एग्जाम्पल दो तीन दे देते हैं फटाफट. 3 एग्जाम्पल तो मैं दे चुका हूं. Power of movement of ear pinna, a small tail in newborn baby, that is lion baby. Long and down dense hair, greatly developed canine teeth, you know we are omnivorous, right? In case of carnivorous, the canine is very well developed because we have acquainted with the soft food, cooking food. So gradually the canine teeth becomes reduced. ठीक है, तो कैनाइन टीथ को भी हम लोग वेस्टिजियल ही बोल सकते हैं. कभी कभी कैनाइन टीथ बहुत बड़ा हो जाता है. हम लोग देखेंगे जो कार्निवरस एनिमल है उनका कैनाइन टीथ कितना लंबा है, हम लोग का तो बहुत छोटा है. तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कभी कभी. And the last one is with related to plant, that is presence of citrus leaves with 2 extra leaflet.
मैं इसका डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइट्रस लिप्स आप लोग देखे हैं, मतलब नींबू का जो पत्ता है, ऑरेंज का जो पत्ता है, देखे हैं आप लोग? सब देखे? ऐसा होता है कि नहीं? नॉर्मली सिंगल लिफलेट की मोर देन वन लिफलेट, मतलब लिप क्या है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? सिंगल है। कभी कभी क्या होता है ना, कैसे हो जाता है देखिए, आप यहाँ क्या बोलेंगे? आप ट्रिपलेट हो गया कि नहीं? टू एक्स्ट्रा लिफलेट, छोटा छोटा दिख रहा है, ये एटाविज्म का कैरेक्टर है। तो ये इंडिकेट करता है एटाविज्म आपको कैसे प्रोवाइड करा, हाउ द एटाविज्म इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, हाउ, right, indicating that we have the ancestor in which the ear pinna is functional. Canine teeth is well developed, long and dense hair with a tail. And during the course of evolution or the path of evolution, these organs becomes either disappeared or become non-functional. Clear है? अब ये इंडिकेट करता है कि साइट्रस लिप्स का और साइट्रस प्लांट का जो एंसेस्टर है उनका ट्रिपलेट होगा कि मनो दैट इज यूनिफॉलिएट होगा, ट्रिपलेट होगा। तो इंडिकेट करता है कि जो साइट्रस प्लांट है उसका जो एंसेस्टर है उनका जो ट्रिपलेट वाला लिफ होता है। एनी प्रॉब्लम? So this is all about the morphological and anatomical evidences. Now we will start the next topic. लायन में भी वाला ह्यूमन में भी है। हाँ, ह्यूमन ही है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? न्यूबॉर्न बेबी, मतलब ह्यूमन का ही बात कर रहे हैं। उस बेबी को हम लोग लायन बेबी बोलते हैं बिकॉज द स्मॉल टेल इज प्रेजेंट। We are coming to paleontological evidences. Paleontological evidences. The evidences in favor of fossils. The study of fossils. The study of fossil is called as what? Na? Paleontology. And who is the father of paleontology? बताइए। Who is the father of paleontology or the famous? हर कोई जानता है उनको, आप भी जानते हैं। Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, by profession, he was a paleontologist. ठीक है? Additionally, he is a great painter. So coming to the definition of fossils. Fossils क्या है? Living or extinct? Present remain कि preserved remain? यही सब क्वेश्चन है। Preserved remains of the hard part of the organism like bone, teeth, shell, etc. And these are found in sedimentary rocks. नाम सुने हो? Or stratified rocks.
देखिए मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ. सपोज टू बी दिस इज अ रॉक, उसके ऊपर एक सपोज टू बी किसी एनिमल का डेड बॉडी आ गया, ठीक है, उसके ऊपर और एक लेयर बन गया, उसके ऊपर और एक लेयर बन गया है, ऐसे लेयर बाय लेयर बनता जाएगा. तो आप इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटा मतलब क्या है? लेयर. And the rock which is formed because of the layer is called as what? A stratified rock. So the formation of rock because of the stratification or the layer formation, then that fossil will formed is called as what na? That is stratified rock. And stratified rock में ही हमेशा fossils मिलता है. कभी भी याद रखिए fossils कभी खुले मैदान में आपको नहीं मिलेगा. खोदना पड़ता है, खोदते 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 लेयर बाय लेयर आप जाएंगे तो फॉसिल्स मिलेगा. And that is only because of the stratification. That is why these are found in the stratified or sedimentary. इसी stratified को ही बोलते हैं sediment. Any problem? So we'll continue in the next class.